श्री जगदंबिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथ षोडशोऽध्यायः। भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। जन्मेजय उवाच भृगुशापान् मुनिश्रेष्ठ हरेरद्भुतकर्मणः अवतारा कथं जाता कस्मिन् मन्वन्तरे विभो विस्तराद्वद्धर्मज्ञ अवतारा कथां हरे पापनाशकरीं ब्रह्मन् श्रुतां सर्वसुखावहां। व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि अवतारान् हरेर्यथा यस्मिन् मन्वन्तरे जाता युगे यस्मिन् नराधिप येन रूपेण यत्कार्यं कृतं नारायणेन वै तत्सर्वं नृपवक्ष्यामि संक्षेपेण तवाधुना। धर्मस्यैवावतारो भूच्चाक्षुषे मनुष्यम्भवे नरनारायणौ धर्मपुत्रौ ख्यातौ महीतले अथ वैवस्वताख्येऽस्मिन् द्वितीये तो युगे पुनः दत्तात्रेयावतारोत्रे पुत्रत्वमगमद्धरिः ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रत्रयोमी देवसत्तमा पुत्रत्वमगमन् देवास्तस्यात्रे भार्यया भृता अनुसूयात्रिपत्नी च सती नामुत्तमा सती यया सम्प्रार्थिता देवा पुत्रत्वमगमस्त्रयः ब्रह्मा भूत् सोमरूपस्थो दत्तात्रेयो हरिः स्वयं दुर्वासा रुद्ररूपोऽसौ पुत्रत्वं ते प्रपेदिरे नृसिंहस्यावतारस्तु देवकार्यार्थसिद्धये चतुर्थे तो युगे जातो द्विधारूपो मनोहरः हिरण्यकशिपो सम्यक् वधाय भगवान् हरिः चक्रे रूपं नारसिंहं देवानां विस्मयप्रदं बलिर्नियम अनार्थाय श्रेष्ठे त्रेतायुगे तथा चकार रूपं भगवान् वामनं कश्यपान् मुने छलयित्वा मखे भूपं राज्यं तस्य जहारः पाताले स्थापयामास बलिं वामनरूपधृक् युगे चैकोनविंशेथ त्रेताख्ये भगवान् हरिः जमदग्निसुतो जातो रामो नाम महाबलः क्षत्रियान्तकरा श्रीमान् सत्यवादी जितेन्द्रियः दत्तवान् मेदिनीं कृष्णं कश्यपाय महात्मने यो वै परशुरामाख्यो हरेरद्भुतकर्मणः अवतारस्तु राजेन्द्र कथिता पापनाशनः त्रेतायुगे रघुर्वंशे रामो दशरथात्मजः नरनारायणान् सौदौ जातौ भुवि महाबलौ अष्टाविंशे युगे सस्तौ द्वापरेऽर्जुनसौरिणौ धराभारावतारार्थं जातौ कृष्णार्जुनौ भुवि कृतवन्तौ महायुद्धं कुरुक्षेत्रेति दारुणम् एवं युगे युगे राजन्नवतारा हरे किल भवन्ति बहवः कामं प्रकृतेरनुरूपतः प्रकृतेरखिलं सर्वं वसुमेतज्जगत्त्रयं यथेक्षति तथैवेयं भ्रामयत्यनिशं जगत् पुरुषस्य प्रियार्थं स रचयत्यखिलं जगत् सृष्ट्वा पुरा हि भगवान् जगदेतच्चराचरं सर्वादि सर्वगश्चासौ दुर्गेयः परमोऽव्ययः निरालम्बो निराकारो निःस्पृहश्च परात्परः उपाधितस्त्रिधा भाति यस्या सा प्रकृतिपरा उत्पत्तिकालयोगात् सा भिन्ना भाति शिवा तदा सा विश्वं कुरुते कामं सा पालयति कामदा कल्पान्ते संहरत्येव त्रिरूपा विश्वमोहिनी तया युक्तो सृजद्ब्रह्मा विष्णुपातितयान्वितः रुद्रा संहरते कामं तया सम्मिलिता शिवा सा चैवोत्पाद्य काकुत्स्थं पुरा वै नृपसत्तमं कुत्रचित् स्थापयामास दानवानां जयाय च एवमस्मिंश्च संसारे सुखदुःखान्विता किल भवन्ति प्राणिना सर्वे विधितन्त्रनियन्त्रिता। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे हरिर्नानावतारवर्णनं नाम षोडशः। अथ सप्तदशः। श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना। राजा जन्मेजय द्वारा व्यास जी से श्री कृष्णावतार का चरित्र सुनाने का निवेदन करना। जन्मेजय उवाच वरांगनास्त्वयाख्याता नरनारायणाश्रमे एकं नारायणं शान्तं कामयाना स्मरातुरा सप्तु कामस्तदा जातो मुनिर्नारायणश्चता निवारितो नरेणाथ भ्रात्रा धर्मविदा नृप किं कृतं मुनिना तेन व्यसने समुपस्थिते ताभिः संकल्पिते नाथ कामार्थाभिर्भृशं मुने सक्रेणोत्पादिताभिश्च बहुप्रार्थनया पुनः याचितेन विवाहार्थं किं कृतं तेन जिष्णुना
इत्येतृक्षोतुमिच्छामि चरितं तस्य मोक्षदं नारायणस्य मे ब्रूहि विस्तरेण पितामह। व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कथां तस्य महात्मना धर्मपुत्रस्य धर्मज्ञ विस्तरेण वदामि ते। सप्तु कामस्तु सन्दृष्टो नरेणात यदा हरि वारितोऽसौ समाश्वास्य मुनिर्नारायणस्तदा शान्तकोपस्तदोवाच तास्तपस्वी महामुनिः। स्मित्पूर्वमिदं वाक्यं मधुरं धर्मनन्दनः अस्मिन् जन्मनि चार्वर्ग्यः कृतसङ्कल्पवानहम् आवाभ्याञ्चन कर्तव्या सर्वथा दारसंग्रह तस्मात् गच्छन्तु त्रिदिवं कृपां कृत्वा मम परि धर्मज्ञानप्रकुर्वन्ते वृतभङ्गं परस्य वै शृङ्गारेऽस्मिन् रसे नूनं स्थायी भावो रतिः स्मृतः कथं करोमि सम्बन्धं तद्भावे सुलोचना। कारणेन विना कार्यं न भवेदिति निश्चयः कविभिः कथितं शास्त्रे स्थायी भावो रसः किल धन्यासु चारु सर्वांगा सभाग्योऽहं धरातले प्रीतिपात्रं यतो जातो भवती नाम कृत्रिमं भवतीभिः कृपां कृत्वा रक्षणीयं व्रतं मम भविष्यामि महाभागा पतिरप्यन्यजन्मनि अष्टाविंशे विशालाक्ष द्वापरेऽस्मिन् धरातले देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं प्रभविष्यामि सर्वथा तदा भवत्यो मद्दारा प्राप्य जन्म पृथक् पृथक् भूपतीनां सुता भूत्वा पत्नीभावं गमिष्यथ इत्याश्वास्य हरिस्तास्तु प्रतिश्रुत्य परिग्रहं विसर्जयत्स भगवान् जग्मुश्च विगतज्वरा एवं विसर्जितास्तेन गता स्वर्गं तदाङ्गना सक्राय कथयामासु कारणं सकलं पुनः आश्रित्य मघवास्ताभ्यो वृत्तान्तं तस्य विस्तरात् तुष्टावतं महात्मानं नारीर्दृष्ट्वा तथोर्वशी इन्द्र उवाच अहो धैर्यं मुने कामं तथैव च तपोबलं येनोर्वश्यासु तपसा तादृग्रूपा प्रकल्पिता इति स्तुत्वा प्रसन्नात्मा बभूव सुराट् ततः नारायणोऽपि धर्मात्मा तपस्यभिरतोऽभवत् इत्येतत्सर्वमाख्यातं मुनेर्वृत्तान्तमद्भुतं नारायणस्य सकलं नरस्य च महामुने तौ हि कृष्णार्जुनौ वीरौ भूभारहरणाय च जातौ तौ भरतश्रेष्ठ भृगुशापवसादिह। राजोवाच कृष्णावतारचरितं विस्तरेण वदस्व मे सन्देहो मम चित्तेऽस्ति तं निवारय मानद ययो पुत्रत्वमापन्नौ हर्यनन्तौ महाबलौ देवकी वसुदेवौ तौ दुःखभाजौ कथं मुने कंसेन निगडे बद्धौ पीडितौ बहुवत्सरान् यो पुत्रो हरिं साक्षात् तपसा तोषितोऽभवत् जातोऽसौ मथुरायां तो गोकुले स कथं गतः कंसं मत्वा दारवत्यां निवासं कृतवान् कथं पित्रादिसेवितं देशं समृद्धं पावनं किल त्यक्त्वा देशान्तरे नार्ये गतवान् स कथं हरि कुलञ्च दिशापेन कथमुत्सादितं हरे भारावतारणं कृत्वा वसुदेवः सनातनः देहं मुमोच तरसा जगाम च दिवं हरि पापिष्ठानां च भारेण व्याकुला भूच्च मेदिनी ते हृता वासुदेवेन पार्थेनामितकर्मणा लुण्ठितायैर्हरे पत्न्यस्ते कथं न निपातिता भीष्मो द्रोणस्तथा कर्णो बाल्लीकोऽप्यथ पार्थिवः वैराटोऽथ विकर्णश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्थिवः सोमदत्तादयः सर्वे नेता समरे नृपा तेषामुत्तारितो भारश्चौराणां न हृता कथं कृष्णपत्न्या कथं दुःखं प्राप्ता प्रान्ते पतिव्रता सन्देहोऽयं मुनिश्रेष्ठ चित्ते मे परिवर्तते वसुदेवस्तधर्मात्मा पुत्रदुःखेन तापितः त्यक्तवान् स कथं प्राणान्नपमृत्युं जगामः पाण्डवा धर्मसंयुक्ता कृष्णे च निरता सदा ते कथं दुःखभोक्तारौ विभुवन् मुनिसत्तमा द्रौपदी च महाभागा कथं दुःखस्य भागिनी वेदी मध्या च सञ्जाता लक्ष्मण संभवा किल सभायां सा समानीता रजोदोष समन्विता बाला दुःशासनेनाथ केशग्रहणकर्षिता पीडिता सिन्धुराज्ञाथ वनमध्य गता सती तथैव कीचकेनापि पीडिता रुदती भृशं पुत्रा पञ्चैव तस्यास्तो नेता द्रौडिना गृहे सुभद्राया सुतो युद्धे बाल एव निपातिता तथा च देवकी पुत्रा षट्कंसेन निषोदिता समर्थेनापि हरिणा दैवं न कृतमन्यथा यादवानां तथा शापा प्रभासे निधनं पुनः कुलक्षयस्तथा तीव्रस्तत्पत्नीनां च लुण्ठनं विष्णुना चेश्वरेणापि साक्षान्नारायणेन च उग्रसेनस्य सेवा वै दासवत् सततं कृता सन्देहोऽयं महाभागा तत्र नारायणे मुनौ सर्वजन्तुसमानत्वं व्यवहारे निरन्तरं हर्षशोकादयो भावा सर्वेषां सत्सा कथं
ईश्वरस्य हरिर्जाता कथमप्यन्यथा गते तस्माद् विस्तरतो ब्रूहि कृष्णस्य चरितं महत् अलौकिकेन भरिणा कृतं कर्म महीतले हता आयुक्षये दैत्याक्लेशेन महता पुनः क्वैश्वर्यशक्ति प्रथिता हरिणा मुनिषत्तम रुक्मिणी हरणे नूनं गृहीत्वा पलायनं कृतं विवासुदेवेन चौरवच्चरितं तदा मथुरामण्डलं त्यक्त्वा समृद्धं कुलसम्मतं जरासन्धभयात्तेन द्वारिकागमनं कृतं तदा केनापि न ज्ञातो भगवान् हरिरीश्वरः किञ्चित् प्रभूहि मे ब्रह्मन् कारणं व्रजगोपनम् एते चान्ये च भावा सन्देहा वासवी सुता नाशयाद्य महाभागः सर्वज्ञोऽसि द्विजोत्तम गोप्यस्थै तथैका सन्देहो हृदयान्न निवर्तते पाञ्चाल्या पञ्चभर्तृत्वं लोके किं न जुगुप्सितं सदाचारं प्रमाणं हि प्रवदन्ति मनीषिणः पशुधर्मा कथं तैस्तु समर्थैरपि संसृतः भीष्मेणापि कृतं किं वा देवरूपेण भूतले गोलकौ तौ समुत्पाद्य यत्तु वंशस्य रक्षणं दिग्धर्मनिर्णया कामं मुनिभिः परिदर्शितः येन केनापि पायेन पुत्रोत्पादनलक्षणः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे सुरांगनानां प्रति नारायण वरदानं नाम सप्तदशः अथाष्टादशः। पाप भार से व्यथित पृथ्वी का देवलोक जाना, इंद्र का देवताओं और पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक जाना, ब्रह्मा जी का पृथ्वी तथा इंद्राद देवताओं सहित विष्णु लोक जाकर विष्णु की स्तुति करना, विष्णु द्वारा अपने को भगवती के अधीन बताना। व्यास उवाच शृण्राजन् प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरितं महत् अवतार कारणं चैव देव्याः चरितमद्भुतं धरैकदा भराक्रान्ता रुदिते चातिकर्षिता गौरूपधारिणी दीना भीता गच्छत्रिभिष्टपं पृष्टा चक्रेण किं तेद्य वर्तते भयमित्यथ केन वै पीडितासि त्वं किं ते दुःखं वसुन्धरे तच्छ्रुत्वेला तदोवाच शृणु देवेश मेऽखिलं दुःखं प्रक्षस्त यत्त्वं मे भाराक्रान्तोऽस्मि मानद। जरासन्धो महापापी मागधेषु पतिर्मम शिशुपालस्तथा चैद्याकाशिराजा प्रतापवान् रुक्मी च बलवान् कंसो नरकश्च महाबलः साल्वासौ पतिक्रूरा केशी धेनुकवत्सकौ सर्वे धर्मविहीनाश्च परस्परविरोधिनः पापाचारा मदोन्मत्ता कालरूपाश्च पार्थिवा तैरहं पीडिता शक्रा भाराक्रान्ता क्षमा विभो किं करोमि को गच्छामि चिन्ता मे महति स्थिता पीडिताहं वराहेण विष्णुना प्रविष्णुना शक्रजाने हरिणा दुःखतरं गता यतोऽहं दुष्टदैत्येन कश्यपस्यात्मजेन वै हृताहं हरिण्याक्षेण मग्ना तस्मिन् महार्णवे तदा शूकररूपेण विष्णुना नेतोऽप्यसौ उद्धृताहं वराहेण स्थापिता हि स्थिराकृता नोचेद्रसातले स्वस्था स्थिता स्यां सुखसायिनी न सक्तास्म्यद्य देवेश भारं वोढुं दुरात्मनाम् अग्रे दुष्टा समायाते ह्यष्टाविंशस्तथा कले तदाहं पीडिता शक्रगन्तास्यासु रसातलं तस्मात् त्वं देवदेवेश दुःखरूपार्णवस्य च पारदो भव भारं मे हरपादौ नमामि ते। इंद्र उवाच इले किं ते करोम्यद्य ब्रह्माणं शरणं व्रज अहं तत्र गमिष्यामि स ते दुःखं हरिष्यति तच्छ्रुत्वा तुरिता पृथिवी ब्रह्मलोकं गता तदा शक्रोऽपि पृष्ठता प्राप्ता सर्वदेव पुरासरा सुरभिमागतां तत्र दृष्टोवाच प्रजापतिः महिं ज्ञात्वा महाराजा ध्यानेन संपस्थितां कस्मारुदसि कल्याणी किं ते दुःखं वदाधुना पीडिताश्च केन त्वं पापाचारेण भूर्वद। धरोवाच कलिरायाति दुष्टोऽयं बिभेमि तद्भयादहं पापाचारा प्रजास्तत्र भविष्यन्ति जगत्पते राजानश्च दुराचारा परस्परविरोधिनः चौरकर्मरता सर्वे राक्षसा पूर्णवैरिणः तान् हत्वा नृपतेन भारं हरमेद्य पितामहः पीडितास्मि महाराज सैन्यभारेण भूभृतां ब्रह्मोवाच नाहं सक्तस्तथा देवी भारावतरणे तव गच्छावा सदनं विष्णुर्देवदेवस्य चक्रिणः सते भारापनोदं वै करिष्यति जनार्दनः पूर्वं मयापि ते कार्यं चिन्तितं सुविचार्य च तत्र गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्र देवो जनार्दनः। व्यास उवाच इत्युक्त्वा वेदकर्तासौ पुरस्कृत्य सुरांश्च गां जगाम विष्णुसदनं मनसारूढश्चतुर्मुखः तुष्टाव वेदवाक्यश्च भक्तिप्रवणमानसः। ब्रह्मोवाच सहस्रशीर्षा त्वमसि सहस्राक्षा सहस्रपात् त्वं वेदपुरुषा पूर्वं देवदेवा सनातना
भूतपूर्वं भविष्यच्च वर्तमानं च यद्विभो अमरत्वं तु यादत्तमस्माकं च रमापते एतावान्महिमातेऽस्ति को न वेत्ति जगत्त्रये त्वं कर्ताप्यविता हन्ता त्वं सर्वगतिरीश्वरः। व्यास उवाच इतीडिता प्रभुर्विष्णु प्रसन्नो गरुणध्वजा दर्शनं च ददौ तेभ्यो ब्रह्मादिभ्यो मलाशया पप्रच्छ स्वागतं देवान् प्रसन्नवदनो हरि ततस्त्वागमने तेषां कारणं च सविस्तरं तमुवाचाब्जजोन्नत्वा धरा दुःखं च संस्मरन् भारावतरणं विष्णो कर्तव्यं ते जनार्दन भूधृतावतारं त्वं द्वापरान्ते समागते हत्वा दृष्टा नृपानुर्व्याहर भारं दयानिधे। विष्णुर्वाच नाहं स्वतन्त्र एवात्र न ब्रह्म न शिवस्तथा नेन्द्रोऽग्निर्न यमस्तुष्ट न सूर्यो वरुणस्तथा योगमायावसे सर्वमिदं स्थावरजङ्गमं ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं ग्रथितं गुणसूत्रतः यथा स स्वेच्छया पूर्वं कर्तुमिच्छति सुब्रता तथा करोति सुहिता वयं सर्वेऽपि तद्वसा यद्यहं स्यां स्वतन्त्रो वै चिन्तयन्तु धिया किल कुतो भवं मत्स्यवपो कच्छपो वा महार्णवे त्रियज्ञो निष्को भोगा का कीर्ति किं सुखं पुनः किं पुण्यं किं फलं तत्र क्षुद्रयोनिगतस्य मे कूलो वाथ नृसिंहो वा वामनो वा भवं कुतः जमदग्ने सुता कस्मात् सम्भवेयं पितामह नृशंसं वा कथं कर्म कृतवानस्मि भूतले क्षतजैस्तु हृदान् सर्वान् पूजयेयं कथं पुनः तत्कथं जमदग्नेश्च पुत्रो भूत्वा द्विजोत्तमः क्षत्रियान् हतवानाजौ निर्दयो गर्भगानपि रामो भूत्वाथ देवेन्द्र प्राविशद्दण्डकं वनं पदातिश्चीरवासाश्च जटावल्कलमावान् पुनः असहायो ह्यपाथेयो भीषणे निर्जने वने कुर्वन्नाखेटकं तत्र विचरं विगतत्रपः न ज्ञातवान् मृगं हैमं माययापेतस्तदा उट्जे जानकीं त्यक्त्वा निर्गतस्तत्पदानुगः लक्ष्मणोऽपि च तां त्यक्त्वा निर्गतो मत्पदानुगः वारितोऽपि मयात्यर्थं मोहिता प्राकृतैर्गुणैः वीक्षरूपं तथा कृत्वा रावणा कपटाकृतिः जहारतरसारक्षो जानकीं शोककर्षिताम् दुःखार्तेन मया तत्र वृत्तं च वने वने सुग्रीवेण च मित्रत्वं कृतं कार्यवसान्मया अन्यायेन हतो बाली शापाच्चैव निवारिता सहायान् वानरान् कृत्वा लङ्कायां चलिता पुनः बद्धोऽहं नागपाशैश्च लक्ष्मणश्च ममानुजा विसंज्ञौ पतितौ दृष्ट्वा वानरा विस्मयं गता गरुणेन तदागत्य मोचितौ भ्रातरौ किल चिन्तामेव ते जाता दैवं किं वा करिष्यति हृतं राज्यं वनं वासो मृतस्ताता प्रिया हृता युद्धं कष्टं ददात्येवमग्रे किं वा करिष्यति प्रथमं तु महद्दुःखं राज्यस्य वनाश्रयं राजपुत्रान्वितस्यैव धनहीनस्य मे सुरा वराटिकापि पित्रा मे न दत्ता वननिर्गमे पदातिरसहायोऽहं धनहीनश्च निर्गतः चतुर्दशैव वर्षाणि नीतानि च तदा मया छात्रं धर्मं परित्यज्य व्याधवृत्त्या महावने। दैवाद्युद्धे जया प्राप्तो नेतो सौमहासुरः आनीता च पुनः सीता प्राप्तयोध्या मया तथा वर्षाणि कतिचित्रत्र सुखं संसारसम्भवं प्राप्तं राज्यं च सम्पूर्णं कोसलानधितिष्ठता पुरैवं वर्तमानेन प्राप्तराज्येन वै तदा लोकापवादभीतेन त्यक्ता सीता वने मया कान्ता विरहजं दुःखं पुनः प्राप्तं दुरासदं पातालं सा गता पश्चाद्धरां विद्वाधरात्मजा एवं रामावतारेऽपि दुःखं प्राप्तं निरन्तरं परतन्त्रेण मे नूनं स्वतन्त्रा को भवेत् तदा पश्चात्कालवशात् प्राप्ता स्वर्गो मे भ्रातृभिः सह परतन्त्रस्य का वार्ता वक्तव्या विबुधेन वै परतन्त्रोऽस्म्यहं नूनं पद्मयोने निशामय तथा तुमपि रुद्रश्च सर्वे चान्ये सुरोत्तमाः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितां चतुर्थस्कन्धे ब्रह्मांडं प्रति विष्णुवाक्यं नामाष्टादशः अथैकोनविंशः। देवताओं द्वारा भगवती का स्तवन। भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देना। व्यास उवाच इत्युक्त्वा भगवान् विष्णु पुनराह प्रजापतिं यन्माया मोहिता सर्वस्तत्त्वं जानाति नो जनः वयं मायावृता कामं न स्मरामो जगद्गुरुं परमं पुरुषं शान्तं सच्चिदानन्दमव्ययम् अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति मोहिता न जानीमो वयं धाता परं वस्तु सनातनं यन्माया मोहितश्चाहं सदा सद्वर्ते परात्मनः। परवान्दारु पांचाली
मायिकस्य यथा वशे भवतापि तथा दृष्टा विभूतिस्तस्य चाद्भुता कल्पादौ भवयुक्तेन मयापि च सुधारणवे मणिद्वीपे तु मन्दार विटपे रासमण्डले समाजे तत्र चादृष्टा श्रुता न वचसापि च तस्मात् तां परमां शक्तिं स्मरन्त्वद्य सुरा शिवां सर्वकामप्रदां मायामाद्यां शक्तिं परात्मनः। व्यास उवाच इत्युक्ता हरिणा देवा ब्रह्माद्या भुवनेश्वरीं सस्मरुर्मनसा देवीं योगमायां सनातनीम्। स्मृतिमात्रा तदा देवी प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ पाशाङ्कुशवराभीते धरा देवी जपारुणा दृष्ट्वा प्रमुदिता देवा तुष्टुभुस्तां सुदर्शनां। देवाऊचुः ऊर्णनाभाद्यथा तन्तुर्विस्फुलिङ्गा विभावसो तथा जगद् यदेतस्यात् निर्गतं तां नता वयं यन्मायाशक्ति संकृप्तं जगत् सर्वं चराचरं तां चित्तं भुवनाधीशां स्मरामा करुणार्णवां यद अज्ञानाद्भवोत्पत्तिर् यज्ञानाद्भवनाशनं संविद्रूपां च तां देवीं स्मरामा सा प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मातर्नता स्म भुवनार्तिहरे प्रसीद सन्नो विधेयि कुरु कार्यमिदं दयार्दे भारं हरस्व विनिहत्य सुरारिवर्गं मय्या महेश्वरि सतां कुरु संभवानि यद्यम्बुजाक्षिदयसेन सुरान् कदाचित् किं ते क्षमारणमुखे शिशरैः प्रहर्तुम् एतत्त्वयैव गदितुं ननु यक्षरूपं धृत्वा तृणं दहुतासपदाभिलाषै कंसाकुजोतयवनेन्द्रसुतश्च केशी वार्हद्रथो बकबकी खरसाल्लमुख्या येने तथा नृपतयो भूभसन्ति तास्तं हत्वा हरस्व जगतो भरमासु माता ये विष्णुनाननेता किल शङ्करेण ये वा विगृह्य जलजाक्षिपुरन्दरेण ते मुखं सुखकरं सुसमीक्षमाणा सङ्केसरैर्विनिहता निजलीलया ते शक्तिं विना हरिहरप्रमुखासुराश्च नैवेश्वरा विचलितुं तव देवि देवी किं धारणा विरहिता प्रभुरप्यनन्तो धर्तुं धराञ्च रजनीशकलावतंसे। इन्द्रुवाच वाचा विना विधिरलं भवति यविश्वं कर्तुं हरि किं रमारहितो तयात् पातुं संहर्तुमीश उमयोज्झित ईश्वरा किं तेताभिरेव सहिता प्रभुवा प्रजेशा। विष्णुर्वाच कर्तुं प्रभुर्न द्रोहिणो न कदाचनाहं नापीश्वरस्तव कला रहितस्त्रिलोक्या कर्तुं प्रभुत्वमनघेत्र तथा विहर्तुं त्वं वै समस्त विभवेश्वरि भासि नूनं। व्यास उवाच एवं स्तुता तदा देवी तानाह विबुधेश्वरान् किं तत्कार्यं वदन्त्वद्य करोमि विगतज्वरा असाध्यमपि लोकेऽस्मिन् तत्करोमि सुरेप्सितं संसन्तो भवतां दुःखं धरायाश्च सुरोत्तमा। देवा ऊचो वसुदेवं वराक्रान्त्या सम्प्राप्ता विबुधान् प्रति ऋतिवेपमाना च पीडिता दुष्टभूभुजै भारापहरणं चास्य कर्तव्यं भुवनेश्वरी देवानामीप्सितं कार्यमेतद् एवाधुना शिवे घातितस्तु पुरा मातस्त्वया महिषरूपभृत् दानभूतिबलाक्रान्तस्तत्सहायाश्च कोटिशा तथा शुम्भो निशुम्भश्च रक्तबीजस्तथा परा चण्डमुण्डौ महावीर्यौ तथैव धूम्रलोचना दुर्मुखो दुःसहश्चैव करालश्चातिवीर्यवान् अन्ये च बहवः क्रूरास्त्वैव च निपातिता तथैव च सुरारीश्च जयि सर्वान् महेश्वरान् भारं हरधरायाश्च दुर्धरं दुष्टभूभुजाम्। व्यास उवाच इत्युक्ता सा तदा देवी देवानाहाम्बिका शिवा सम्प्रहस्यासितापाङ्गी मेघगम्भीरया गिरा। श्रीदेवी उवाच मयेदं चिन्तितं पूर्वं मनसावतरणं सुरा भारावतरणं चैव यथा स्याद्दुष्टभूभुजां मया सर्वे निहन्तव्या दैत्येशा ये मयि भुजा। मागधाद्या महाभागा सशक्त्या बन्धतेजसा भवद्भिरपि स्वैरंसैरवतीर्यधरातले मक्षत्तियुक्तैः कर्तव्यं भारावतरणं सुरा कश्यपो भार्या सार्धं द्विजानां प्रजापति यादवानां कुले पूर्वं भविता नकदुन्दुभिः तथैव भृगुशापाद्वै भगवान् विष्णुरव्यया अंशेन भविता तत्र वसुदेवसुतो हरिः तदाहं प्रभविष्यामि यशोदायां च गोकुले कार्यं सर्वं करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमा
कारागारे गतं विष्णुं प्रापयिष्यामि गोकुले शेषं च देवकी गर्भात् प्रापयिष्यामि रोहिणीं मक्षक्त्योपचितौ तौ च कर्तारौ दुष्टसंक्षयं दुष्टानां बहुभुजां कामं द्वापरान्ते सुनिश्चितम् इन्द्रांसोऽप्यर्जुना साक्षात् करिष्यति बलक्षयं धर्मांसोऽपि महाराजो भविष्यति युधिष्ठिरः वायवंशो भीमसेनश्चाश्विन्यंसौ च यमावपि वत्सुरंसोऽथ गाङ्गेया करिष्यति बलक्षयं व्रजन्तु च भवन्तोऽद्य धरा भवतु सुस्थिरा भारावतरणं नूनं करिष्यामि सुरोत्तमा कृत्वा निमित्रमात्रास्तान् स्वशक्त्यां न संशया कुरुक्षेत्रे करिष्यामि क्षत्रियाणां च संक्षयम् असूयेर्ष्या मतिस्तृष्णा ममताभिमता स्प्रिया जिगीषा मदनो मोहो दोषैर्नङ्क्षन्ति यादवा ब्राह्मणस्य च शापेन वंशनाशो भविष्यति भगवान् विशापेन त्यक्ष्यति तत्कलेवरं भवन्तोऽपि निजाङ्गैश्च सहायासार्गधन्वना प्रभवन्तो नारीका मथुरायां च गोकुले व्यास उवाच इत्युक्त्वान्तर्दधे देवी योगमाया परात्मना सधरा वैसुरा सर्वे जग्मु स्वान्यालयानि च धरापि सुस्थिरा जाता तस्या वाक्येन तोषिता ओषधीभिरुधोपेता बभूव जनमे जया प्रजाश्च सुखिनो जाता द्विजाश्चापुर्महोदयं सन्तुष्टा मुनयः सर्वे बभूवुर्धर्मतत्परा। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितां चतुर्थस्कन्धे देवान् प्रति देवी वाक्यवर्णनम नामैकोनविंशः अथ विंशः। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्णावतार की कथा का उपक्रम। व्यास उवाच शृणु भारत वक्ष्यामि भारावतरणं तथा कुरुक्षेत्रे प्रभासे च क्षपितं योगमायया यदुवंशे समुत्पत्तिर्विष्णोरमित तेजसा भृगुशापप्रतापेन महामायाबलेन च क्षितिभार समुत्तार निमित्तमिति मे मतिः माययाभीतो योगो विष्णुर्जन्मधरातले किं चित्रं नृपदेवी सा ब्रह्मविष्णुसुरानपि नर्तयत्यनिसम्माया त्रिगुणान् परान् किमु गर्भवासोद्भवं दुःखं विड्मूत्रास्नायुसंयुतं विष्णुरापादितं सम्यक् यया विगतलीलया पुरारामावतारेऽपि निर्जरावानराकृता विदितं ते तत् यथा विष्णुर्दुःखपाशेन मोहितः। अहं ममेति पाशेन सुदृढेन्नराधिप योगिनो मुक्तसङ्गाश्च मुक्तिकामा मुमुक्षवा तामेव सम्पासन्ते देवीं विश्वेश्वरीं शिवां यद्भक्तिलेशलेशांसलेशलेशलवांसकं लब्ध्वा मुक्तो भवेज्जन्तुस्तां न सेवेत को जनः भुवनेशीत्वेव वक्त्रे ददाति भुवनत्रयं मां पाहीत्यस्य वत्सो देया भावादृणान्विता विद्या विद्येति तस्या द्वे रूपे जानेहि पार्थिव विद्यया मुच्यते जन्तुर्बध्यते विद्यया पुनः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे तस्यावसानुगा अवतारा सर्व एव यन्त्रिता इव धामभिः कदाचिच्च सुखं भुङ्क्ते वैकुण्ठे क्षीरसागरे कदाचित् कुरुते युद्धं दानवैर्बलवत्तरैः हरिः कदाचित् यज्ञान्वै विततान् प्रकरोति च कदाचिच्च तपस्तीव्रं तीर्थे चरति सुब्रत कदाचित् शयने शेते योगनिद्रामुपाश्रिता न स्वतन्त्रा कदाचिच्च भगवान् मधुसूदनः तथा ब्रह्मा तथा रुद्र तथेन्द्रो वरुणो यमः कुबेरोऽग्निरवीन्द्रो च तथान्ये सुरसत्तमा मुनयासनकाद्याश्च वसिष्ठाद्यास्तथा परे सर्वेऽम्बावसगा नित्यं पाञ्चालीव नरस्य च नसिप्रोता यथा गावो विचरन्तीव सानुगा तथैव देवता सर्वा कालपाशनियन्त्रिता हर्षशोकादयो भावा निद्रातन्द्रालसादया सर्वेषां सर्वदा राजन् देहिनां देहसंश्रिता अमरा निर्जरा प्रोक्ता देवाच ग्रन्थकारकै अभिधानतश्चार्थतो न ते नूनं तादृशा क्वचित् उत्पत्तिस्थितिनाशाख्या भावा येषां निरन्तरम् अमरास्ते कथं वाच्या निर्जराश्च कथं पुनः कथं दुःखाभिभूता वा जायन्ते विबुधोत्तमा कथं देवाश्च वक्तव्या व्यसने क्रीडनं कथं क्षणाद् उत्पत्तिनाशश्च दृश्यतेऽस्मिन् संशया जलजानां च कीटानां मशकानां तथा पुनः उपमानः कथं चैषा मायुषोऽन्ते मरास्मृता ततो वर्षायुषश्चापि शतवर्षायुषस्तथा
मनुष्यायमरा देवा तस्मात् ब्रह्मा परः स्मृतः रुद्रस्तथा तथा विष्णु क्रमशश्च भवन्ति नश्यन्ति क्रमशश्चैव वर्धन्ति चोत्तरोत्तरं नूनं देहवतो नाशो मृतस्योत्पत्तिरेव च चक्रवद्भ्रमणं राजन् सर्वेषां नात्र संशयः मोहजालावृतो जन्तुर्मुच्यते न कदाचन मायायां विद्यमानायां मोहजालं न नश्यति उत्पत्तिकाल उत्पत्ति सर्वेषां नृपजायते तथैव नासा कल्पान्ते ब्रह्मादीनां यथाक्रमं निमित्तं यस्तु यन्नासे स घातेति तं नृप नान्यथा तद्भवेन्नूनं विधिना निर्मितं तु यत् जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखं वा सुखमेव वा तत्तथैव भवेत् कामं नान्यथेन विनिर्णयः। सर्वेषां सुखदौ देवौ प्रत्यक्षौ शशि भास्करौ न नश्यति तयो पीडा क्वचित् तद्वैरिसंभवा भास्करस्य सुतो मन्दाक्षयी चन्द्राकलङ्कवान् पश्य राजन् विधेसूत्रं दुर्वारं महतामपि वेदकर्ता जगत्सृष्टा बुद्धिदस्तु चतुर्मुखा सोऽपि विक्लवतां प्राप्तो दृष्ट्वा पुत्रं सरस्वतीं शिवस्यापि मृता भार्या सती दग्ध्वा कलेवरं सोऽभवद्दुःखसन्तप्ता कामार्तश्च जनार्तिः कामाग्निदग्धदेहस्तु कालिन्द्यां पतिता शिवा सापि श्यामजला जाता तन्निदाघवसान् नृप कामार्तो रममाणस्तु नग्नासोऽपि भृगुर्वनं गता प्राप्तोत भृगुणा सप्ता कामातुरो भृशं पतत्वद्यैव ते लिङ्गं निर्लज्जेति भृशं किल पवौचामृतवापीञ्च दानवैर्निर्मितां मुदे इन्द्रोऽपि च भृशो भूत्वा वाहनत्वं गताक्षितौ आद्यस्य सर्वलोकस्य विष्णुरेव विवेकिनः सर्वज्ञत्वं गतं कुत्र प्रभुशक्ति कुतो गता यद्येम मृगविज्ञानं न ज्ञातं हरिणा किल राजन् मायाबलं पश्य रामो हि काममोहिता रामो विरहसन्तप्तो रुरोध वृषमातुरा यो पृच्छत्पादपान्मूढा क्व गता जनकात्मजा भक्षिता वारिता केन रुदन्नुच्चतरं ततः लक्ष्मणाहं मरिष्यामि कान्ता विरह दुःखितः त्वं चापि मम दुःखेन मरिष्यसि वने नुज आवयोर्मरणं ज्ञात्वा माता मम मरिष्यति शत्रुघ्नोऽप्यति दुःखार्ता कथं जीवितुमर्हति सुमित्रा जीवितं जय्यात् पुत्रव्यसनकर्षिता पूर्णकामात् कैकेयी भवेत् पुत्रसमन्विता हासीते कुगतासि त्वं मां विहाय स्मरातुरा एहि मृगसावाक्षी मां जीवय कृशोदरी किं करोमि कुगच्छामि त्वदधीनं च जीवितं समाश्वासय दीनं मां प्रियं जनकनन्दिनी एवं विलपता तेन रामेणामित तेजसा वने वने च भ्रमता नेक्षिता जनकात्मजा शरण्या सर्वलोकानां रामा कमललोचना शरणं वानराणां स गतो मायाभिमोहिता सहायान् वानरान् कृत्वा बबन्ध वरुणालयं जघान रावणं वीरं कुम्भकर्णं महोदरम् आनीय च तथा सीतां रामो दिव्यमकारयत् सर्वज्ञोपीर्तां मत्वा रावणेन दुरात्मना किं ब्रवीमि महाराज योगमायाबलं महत् यया विश्वमिदं सर्वं भ्रामितं भ्रमते किल एवं नानावतारेऽत्र विष्णुशापवशं गता करोति विविधाश्चेष्टा दैवाधीना सदैव हि तवाहं कथयिष्यामि कृष्णस्यापि विचेष्टितं प्रभुं मानुषे लोके देवकार्यार्थसिद्धये कालिन्दे पुलने रम्ये ह्यासीन्मधुवनं पुरा लवणो मधुपुत्रस्तु तत्रासीद्दानवो बलि द्विजानां दुःखदा पापो वरदानेन गर्विता नेतोऽसौ महाभागा लक्ष्मणस्यानुजेन वै शत्रुघ्नेनाथ संग्रामे तं निहत्य मदोत्कटं वासिता मथुरा नाम पुरी परमशोभना सतत्र पुष्कराक्षौधौ पुत्रौ शत्रुनिषूदना निवेश्य राज्ये मतिमान् काले प्राप्ते दिवं गता सूर्यवंशक्षयितां तो यादवा प्रतिपेदिरे मथुरा मुक्तिदां राजन् व्ययाति तनया पुरा सूरसेनाभिधा सूरस्तत्राभुन्मेदिनीपतिः माथुराञ्चूरसेनाश्च भुजे विषयान्नृप तत्रोत्पन्ना कश्यपांसा शापाच्च वरुणस्य वै वसुदेवोति विख्याता सूरसेन सुतस्तदा वैश्यवृत्तिरता शोभोन्मृते पितरि माधव उग्रसेनो बभूवाथ कंसस्तस्यात्मजो महान् अदितिर्देवकी जाता देवकस्य सुता तदा शापाद्वै वरुणस्याथ कश्यपानुगता किल दत्ता स वसुदेवाय देवकेन महात्मना विवाहे रचिते तत्र वाग्भूत गगने तदा कंस महाभाग देवकी गर्भसंभवा अष्टमस्तु सुता श्रीमा तव हन्ता भविष्यति तच्छ्रुत्वा वचनं कंसो विस्मृतो भून्महाबला
देववाचं तु तां मत्वा सत्यां चिन्तामवापसा किं करोमीति संचिन्त्य विमर्शकमकरोत्तदा निहत्यैनां न मे मृत्युर्भवेत् अद्यैव सत्वरम् उपायो नान्यथा चास्मिन् कार्ये मृत्युभयावहे इयं पितृस्व सा पूज्या कथं हन्मीत्य चिन्तयत् पुनर्विचारयामास मरणं मेऽस्त्यहो स्वसा पापेनापि प्रकर्तव्या देहरक्षा विपश्चिता प्रायश्चित्तेन पापस्य शुद्धिर्भवति सर्वदा प्राणरक्षा प्रकर्तव्या बुधैरप्येदसा तथा विचिन्त्य मनसा कंसा खड्गमादाय सत्वरः जग्राताम्बरारोहां केशेष्वाकृष्य पापकृत् कोशात् खड्गमुपाकृष्य हन्तुकामो दुराशया पश्यतां सर्वलोकानां नमोढां तां च कर्षः हन्यमानां च तां दृष्ट्वा हाहाकारो महानभूत् वसुदेवानुगा वीरा युद्धायुध्यतकारमुका मुञ्च मुञ्चेति प्रोचुस्तं ते तदाद्भुतसाहसा कृपया मोचयामासुरदेवकीं देवमातरं तद्युद्धमभवद्घोरं वीराणां च परस्परं वसुदेवसहायानां कंसेन च महात्मना वर्तमाने तथा युद्धे दारुणे लोमहर्षणे कंसं निवारयामासुरवृद्धाय यदुसत्तमा पितृसुसेयं ते वीर पूजनीया च बालिसा न हन्तव्या त्वया वीर विवाहोत्सवसङ्गमे स्त्रीहत्यादौ सहा वीर कीर्तिघ्ने पापकृत्तमा भूतभासितमात्रेण न कर्तव्या विजानता अन्तरितेन केनापि शत्रुणा तव चास्य वा उदितेति कुतो न स्यात् वाग्नर्थकरी विभो यस्ते विघाताय वसुदेव गृहस्य च अरिणा रचिता वाणी गुणमाया विदा नृप विभेषि वीरस्त्वं भूत्वा भूतभासितभाषया यशो मूलविघातार्थमुपायस्तुरिणा कृतः पितृस्सान हन्तव्या विवाह समये पुनः भवितव्यं महाराज भवेच्च कथमन्यथा एवं तैर्बोध्यमानोऽसौ निवृत्तो नाभवत् यदा तदा तं वसुदेवोऽपि नीतिज्ञा प्रत्यभाषत कंस सत्यं ब्रवीम्यद्य सत्याधारं जगत्त्रयं दास्यामि देवकी पुत्रान् उत्पन्नास्तव सर्वशः जातं जातं सुतं तुभ्यं न दास्यामि यदि प्रभो कुम्भीपाके तदा घोरे पतन्तो मम पूर्वजा श्रुत्वा तव वचनं सत्यं पौरवाये पुरस्थिता ऊचुस्ते त्वरिता कंसं साधु साधु पुनः पुनः नामित्याभासते क्वापि वसुदेवो महामना केशं मुञ्च महाभागः स्त्रीहत्यापातकं तथा व्यास उवाच एवं प्रबोधिता कंसो यदुवृद्धैर्महात्मभिः क्रोधं त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सत्यवाक्यानुमोदिता ततो दुन्दुभयो नेदुर्वादित्राणि च सस्वनो जय शब्दस्तु सर्वेषाम् उत्पन्नस्तत्र संसदि प्रसाद्य कंसं प्रतिमोच्य देवकीं महायशासोरसुतस्तदानीं जगामगेहं स्वजनानुवृत्तो नवोढयाभीतभयस्तरस्वी। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे कृष्णावतार कथोपक्रम वर्णनम नाम 20। श्री जगदम्बिकायै नमः। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।